Okay, so I was asking this to all of you. What is special about today, 14th of Feb, very auspicious day? क्या special है आज के बारे में? Anyone in the chat box can share, or you can also unmute if you like. No one, किसी को नहीं पता आज क्या स्पेशल है? हम्म? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे Vasant कृष्ण. Panchami. Okay, some answer started coming now. Valentine's Day, many are saying. Some are also saying Vasant Panchami है आज Proji. Okay, so good. Mostly people are, in the world, they know that today is Valentine's Day. And actually, Valentine's Day is also very, very auspicious day. Really, it is. If you know the background story, then you will glorify the Valentine's Day. But दिक्कत ये है हमको पता नहीं है कि आज हुआ क्या. Why it is been as celebrated as a day of love. Yeah. Black Day, Prabhuji, definitely Harshit Prabhu. Okay, he also reminded one of the very, miserable incident which happened on this particular day only for India. It is really, really lamentable, and we should offer our prayers to all those soldiers who have, sacrificed their lives for us. So that is there. And वसंत पंचमी भी है आज. काफी सारे वैष्णव आचार्यास का appearance and disappearance day है आज. And at the same time today is Valentine's Day. Okay, but आज हमारा theme Valentine's Day के ऊपर है, so we'll follow that only, and other things which we'll cover some other day, like Vasant Panchami and Black Day and other things. Okay, so let us discuss this. First of all, what is the scenario of today is that we celebrate so many things, we celebrate so many festivals, but we really don't know the essence behind them. The history behind them, why we celebrate them. That is the missing thing. हमारे यहाँ जो अभी कल्चर चल रहा है उसको एक स्टोरी से मैं आपको बता सकता हूँ, आप समझ पाएंगे उसको अच्छे से. There was one person, once what happened with him is that he was going in a street and he found a golden brick. Yeah. वो गोल्डन ब्रिक जैसे ही मिला वो बहुत खुश हो गया, अरे अमेजिंग, आई हैव फाउंड अ गोल्डन ब्रिक. या. एंड ही टुक दैट ब्रिक, ब्रॉट इट होम, और घर लाके घर के जो पीछे आंगन होता है उसमें गड्ढा खोद के वहां गड़ा दिया. अभी गड़ा दिया, एंड क्या करता था ये, डेली जाके वो गड्ढा खोद के उसको देखता था. Oh, I have a golden brick, amazing. If he used to feel very happy, and then again he used to put it down and cover that up. एंड ये चीज डेली एक पड़ोसी जो है उसका देख रहा था कि यार ये क्या कर रहा है. सो एक दिन उसने क्या करा कि वो सोने की ब्रिक निकाल के वहां पे लोहे की ब्रिक रख दी. एंड नेक्स्ट डे व्हेन दैट पर्सन केम, he found that there is no golden brick but there is an iron brick instead. He started lamenting like anything. वो क्या हो गया, मेरी सोने की ईंट कहाँ चली गई, एंड कौन ले गया उसको, कीड़े पड़े उसके साथ बुरा हो जाए, ये फलाना ढिमका सब कुछ बातें करने लगा. एंड देन वो नेबर तो देख ही रहा था, as he used to watch every single day, so he came and he said, what you are searching for? He said, my golden brick got lost. He said, isn't this one? He said, yeah. Rascal, how did you have this courage to take my golden brick? हाँ, मैं तो कुछ छोड़ूंगा नहीं. ऐसा करके वो उसको गाली देने लगा. तो बोला, ए पहले सबर रखो. First listen why I did this. He said, what does it matter to you? Is it a golden brick or iron brick? Anyway, you are just going to dig the hole, going to see it, and going to put it again back into that hole. So आपके लिए तो कोई फर्क ही नहीं है. So same thing is with us. जब अभी राम जी का टेम्पल ओपन हुआ अयोध्या में, जय श्री राम, होल इंडिया वाज looking so beautiful with the flags of Lord Shri Ram everywhere, every single shop. Even IIT also celebrated, that festival. So we all celebrate. Whenever festivals come, we feel so much proud. Oh, such a nice culture we have, such a nice wisdom we have. But what we do is that as festival goes away, we start living our normal life, forgetting everything what is given in the Shastras, what is given in the scriptures. So it is very important thing. Similarly, here is a Valentine's Day. Many people celebrate it in a very different way.
why they do it, and what is the story behind it. We are going to discuss everything. Just be with me for the next 1 hour and everything will be revealed. Okay. So the story of the Valentine's Day starts around 1700 years ago. So as we all know, Jesus Christ came 2000 years ago, and उनके जाने के 270 साल बाद रोम में एक एम्परर हुआ करता था. His name was Claudius. Yeah, he was an emperor of Rome. And at that time, the Christianity was like, it was like an explosion of Christianity happening all over the world. So many churches were coming up, so many people were accepting Christianity. तो ये चल रहा था उस समय पूरे वर्ल्ड में. And this person was not at all interested in Christianity. इनको सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने से मतलब था कि मेरी मिलिट्री पावर ज्यादा से ज्यादा हो, मैं आई शुड हैव more military strength to defend myself. Nothing to do with religion. Same scenario is today also. Every country is engaged in uh, empowering their military, but they are not focusing on their culture, their values, their character of the people. Yeah, which is the more important thing. So here Emperor Claudius was like that, and what he did is that he wanted to expand his military. But हो ये रहा था कि ये मिलिट्री के लिए जो सोल्जर्स को हायर करने जाते थे, at that time those soldiers were more interested in getting married and producing children, than to join the army and to fight for the Rome. So ये सिनेरियो था. और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शादी करने में मजा आ रहा था, बच्चे पालने थे, सेक्स एंजॉयमेंट करना था, और यहाँ पे क्लॉडियस को अपनी आर्मी बढ़ानी थी. सो इन दिस सिनेरियो व्हाट क्लॉडियस डिड इज दिस. क्लॉडियस ने एक लॉ जारी कर दिया. नो वन इज गोइंग टू मैरी इन रोम. कोई शादी नहीं कर सकता ऑफिशियली रोम. एंड सेकेंड थिंग, नो वन इज गोइंग टू फॉलो क्रिश्चियनिटी. कोई क्रिश्चियनिटी भी फॉलो नहीं करेगा. अब ये लॉ जारी कर दिया, but many people were there who were not accepting this law. So what he did is that he forced this law upon them. उनके ऊपर जबरदस्ती उनसे ये लॉ फॉलो करवाया कि नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा, मिलिट्री में आओ, शादी वादी नहीं करने का. या सो दिस वाज द सीन गोइंग ऑन एट दैट टाइम. देयर वाज वन सेंटली person. His name was Valentine. You know, he's a Saint Valentine. He was a strict follower of Christianity. Someone has unmuted. Please mute yourself. Otherwise, I need to do it by myself. Hmm. Yes, Sharma ji, please unmute everyone. Okay. So, of Christianity, and was very kind and loving to each and everyone. And he knew what is the significance of marriage, how important is to marry someone. In the Bible also, it is given that he started marrying people who were brave. जो करना चाहते थे शादी, उनकी शादी ये कराने लगे. यू नो छुपके से, ऑफ कोर्स, और रोम में ही थे ये उस समय. So he was really very very brave. So what he did is this. Why? Because he knew the significance of marriage. Nowadays the culture is getting very very different. you know People don't want to marry, and even though they marry, वो क्या होता है, जस्ट एक कह सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, जस्ट like a formality they do. Therefore we see the divorce rates are getting higher and higher and higher. The relationships are getting just so-called relationships. There is no essence in that. There is no service attitude in this. People are just marrying for the sake of a status that I am married. Yeah. In other countries like Europe, Russia, America, the suicide rates are reaching up to the percentage of 60 to 70%. Can we even imagine? In India, the first divorce was registered. अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप शायद उसको गैस भी नहीं कर पाएंगे. Let me just share this with you. In 1982 or 1983, the first divorce was registered in India. The official divorce happened in India. Why? Because in our culture,
The relationship is based on the service as attitude, not on the sense gratification attitude. You know, आजकल का सिनेरियो क्या है? आप मेरी बैक स्क्रैच करो, आई विल स्क्रैच योर बैक. As soon as you stop, I will stop. You know, you go in your direction, I will go in my direction. So this is what is happening. And live in culture, you know, live in relationships. How much dangerous they are, we cannot even think of it. You know, there was one just news came some months before in Delhi. One boy, what he did is that he was in a relationship with a girl, in a live-in relationship with a girl, and one day that girl was found in 32 pieces in a fridge. What kind of love is this? You love so much that person, you did nothing but 32 pieces, and now you love that person in 32 different ways. Yeah, that is the way of showing love to the other person. So therefore, you know, the culture of marriage is very, very important to have a deep relationship. What does the marriage do? Actually, when you marry someone, you have a responsibility of that person. In live-in relationship, there is no responsibility. As soon as one day there is some fight or there is some difference in way of thinking or moods, we'll separate. You find some other person, I'll find someone else. What is this? Is it so easy? Really? No, it is not. Because there are emotions also which are involved. One person may be detached, but the other person is really, sometimes he gets serious in the marriage. And there is lots of more disadvantages which I will not go in depth. You all are very cultural people, so you already know the significance of marriage. Now the question is this: how this culture is bringing up, where it is coming from, you know, कहाँ से ये आइडियाज आ रहे हैं माइंड में, कहाँ से ये प्रोपोगेट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, हाँ, कहाँ से पीपल इसके बारे में जान रहे हैं और ये करने में हेजिटेट नहीं हो रहे हैं. You know, the one and only answer is this in front of you. Yeah, this is a thing. Where the people are getting inspired to all kind of nonsense. Hotstar, Netflix, Prime Video, YouTube, you know, so much of binge watching is there. And you know, कोई भी वेब सीरीज या कोई भी मूवी जो टॉप ऑफ द बार होती है, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? एडल्ट्री एंड वायलेंस. If any of the movie which is on the top of the bar, in that movie there has to be a lot of adultery and violence. From Western we see Games of Thrones. India mein web series like Mirzapur and all, they are very very famous. Why? Because there is lots of violence. हाँ, अभी recently एक movie launch हुई Animal. Yeah, and it is also was very much into the words, you know, or the people. Have you watched it? मैं अपनी कंपनी में सुन रहा था, some people are talking about. Nothing is there in the movie, only violence. अब मुझे एक बात बताइए, when you are listening violence, when you are watching violence, when you are, you know, being very attentive to that or some other content, then what will happen in your day-to-day life? It is very, very natural that you will also see that and you will also not hesitate when it is happening. आजकल हम इसलिए देखते हैं, अगर सड़क पे कभी कोई व्यक्ति बहुत गलत तरीके से किसी के साथ व्यवहार व्यवहार कर रहा होता है, किसी को मार रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, अदर पीपल डोंट इंटरफियर एट ऑल. दे थिंक ओके, व्हाट डज इट विथ यू टू डू, यू नो, हमको यहाँ क्या लेना देना, हमारा तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे. हाँ, हम तो हमारे काम से जाएंगे, ठीक है, ये तो चलता ही रहता है आजकल. न्यूज पेपर्स आप पढ़िए, न्यूज पेपर्स में क्या भरा पड़ा होता है? ओनली वायलेंस. मोस्ट ऑफ द पेजेस आर फिल्ड विद दैट ओनली. There is only one or two newses which are of good things happening in the world. Most of things are related to corruption, violence, deaths, suicides, like this. So there is one very interesting principle. Nowadays people are suffering to control their mind. They're not able to control their mind. The statistics are like, World Health Organization has shared this. Every 1 out of 5 people is suffering from a severe anxiety or depression or stress, and he needs a very nice care or consultancy of a nice doctor. Why it is happening, my dear friends? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि there is a ego principle in the world.
It applies to each and every machine. आप सब engineers हैं, mostly are engineers. You all know this. You know what is Gigo principle says? Garbage in, garbage out. ठीक है? If you are creating a software or any machine, if you put the input garbage, what will come out is only errors. Only garbage will come out. Nothing good will come out. Let's say there is a bucket, you know, if you put only garbage into that bucket will be called as dustbin, you know. क्योंकि अब उस बकेट से हीरे जवाहरात बाहर नहीं आने वाले, गोल्ड बाहर नहीं आएगा, पैसे बाहर नहीं आएंगे. ओनली थिंग विच विल कम आउट इज गार्बेज. कूड़ा ही बाहर आएगा, क्योंकि कूड़ा ही तो डाला है आपने जी. या सो देन सेम प्रिंसिपल आल्सो सेज दैट गुड इन गुड आउट. अगर किसी बकेट में आप अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे तो बाहर भी अच्छी अच्छी चीजें आएंगी. सो दिस माइंड, दिस ब्रेन इज लाइक अ प्रोसेसर, you know. Whatever program we feed in, our senses, which are like servo motors, will work in that particular way, you know. If you watch some adult content when you go to a college or some way anywhere, your senses will, you know, will see the world in that particular way, will be looking the world in a very very lustful way. But if you hear the Bhagavad Gita sessions here, the discourses which we are giving here, what will happen if we are describing here that, you know, you are not this body, you are soul? What will happen, my dear friends, when you go out, when you see anyone disabled or highly capable, you will just see, okay, he is also nothing but a part and parcel of God, and all these capabilities are given to him for some time to use. Yeah. So अगर कोई highly capable है, you will not get envious, और अगर कोई incapable है, you will not you know, reject him, or you will not feel disgusted when you look at him. So this is what happens. Why? Because you are feeding the right program now, so the right things will come out. So therefore we need to save ourselves. You know, जो हम वीडियो देखते हैं ना, video is nothing but a sequence of images put it together in one frame. There are thousands of images. जितना हाई क्वालिटी वीडियो होता है उसके एक फ्रेम में उतनी ज्यादा इमेजेस होती हैं. तो कैन वी जस्ट इमेजिन इन 1 second देयर आर मल्टीपल मैनी मैनी इमेजेस, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस आर बम्बार्डेड ऑनटू आवर हेड. एंड गजब की चीज ये है, वो मूवीज और वेब सीरीज देखते टाइम हम कंप्लीटली अटेंटिव होते हैं. सो देयरफॉर एवरीथिंग वी ग्रास्प, we don't miss anything out. Therefore, we take a lot of garbage just by watching a half an hour episode of any series or anything. Yeah. So here we can also see the today's scenario, IT wedding. You know, person fixes his marriage with someone else and got married to some other girl, and he sent a mail to the previous one, and you know, he said, "Didn't you get my mail? तुमको मेरा मेल नहीं मिला, मैंने तो भेजा था." Yeah. So now Saint Valentine, let us come back to the story. Saint Valentine was doing this, and not just this, he was also giving shelter to the needy. और वो भी कौन से needy? जो क्रिश्चियंस थे. रोम में जो भी क्रिश्चियंस थे उन सबको शेल्टर दे रहे थे सेंट वैलेंटाइन. And not just that, he was also giving shelter to those Christians who were one of the biggest enemy in the eyes of Rome leaders. सो रोम के लीडर्स को जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहे थे रोम में, उनको भी शरणागति दे रहे थे सेंट वैलेंटाइन अपने चर्च में, अपने पास, अपनी जगह में. सो by doing this he became one of the biggest enemy of Rome. And you know what happened? As we all know, हर मूवी में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है. And the story goes like that. So here Claudius caught the Saint Valentine, एंड उनको पकड़ने के बाद उनको बहुत बेरहमी से काफी समय तक टॉर्चर करते हैं. क्यों? जस्ट टू कन्विंस हिम टू एक्सेप्ट दिस रिलीजन ऑफ एथियज्म. यू नो, जस्ट टू एक्सेप्ट दैट देयर इज नो गॉड, कोई भगवान है ही नहीं. जस्ट डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, ट्राई योर बेस्ट to do as much as you can and die. This is the principle of life. But he didn't accept it. Even though they tortured him a lot, he didn't accept it. And at last, on this particular day only, on this 14th Feb, this saint named Valentine
was beheaded. उनका गला काट दिया गया by Rome's people. And this is the day which represents a sacrifice of a person on the for the love of God. भगवान के प्रेम के लिए किसी ने सेक्रीफाइस कर दी अपनी पूरी लाइफ. ये है ये दिन वैलेंटाइंस डे, which is being celebrated in a completely, totally 200% 180-degree opposite manner. There is no talk of God. No one even knows this story at all कि हुआ क्या था आज के दिन. किसी को ये भी नहीं पता वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है. See the amazing thing about today. Why it is like that? अब ये क्यों है, ऐसा कैसे हो गया, किसी को पता भी नहीं चला कि यार ये वैलेंटाइंस डे की स्पेशलिटी क्या है. मुझे भी आज तक नहीं पता था, यू नो. सो उसके पीछे का रीजन है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन. कस्टमर, वी नीड मोर एंड मोर कस्टमर. यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कस्टमर? जो कष्ट से मरे वो कस्टमर, या. तो actually we don't know this. All of us are barely aware about anything in this world which is happening right now. But we all are in a very, very great trap. There's a trap, you know. First of all of us are being controlled by government because government gives some laws which we should follow. Government agrees to something and it stops something to come into the market. Who controls the government? That is the important thing to understand. Actually, all the big giants which are sitting there, you know, all these industrial people who have big industries, they give taxes to the government and they have complete control over the government. Oh, even though we don't see them doing this, but this is the scene behind. So therefore what happens is that हम क्या खरीदेंगे, हम कौन सी घड़ी पहनेंगे, हम कौन सा चश्मा पहनेंगे, हम कौन से कपड़े पहनेंगे, हम कैसे दिखेंगे, हम कौन सा तेल लगाएंगे, हम कौन सी साबुन यूज करेंगे, everything, each and every detail of our life has been decided by these people. Has been decided by these people. हम नहीं डिसाइड करते, ये डिसाइड करते. कैसे डिसाइड करते? आप टीवी देखते हैं, टीवी में आप सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए. बट वो एंटरटेनमेंट को डिस्टर्ब करने बीच में कुछ आता है जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट, जो आपको नहीं चाहिए बट आता है. क्यों आता है? क्योंकि उसी से पैसा आता है. पैसा आपके टीवी देखने से नहीं मिलता. टीवी वाले को, टीवी चैनल वाले को, टीवी चैनल वाले को पैसा देता है एडवर्टीजमेंट वाले. नॉट जस्ट दैट, मूवीज, वेब सीरीज, कुछ भी आप देखो. आप रोड पे ट्रेवल करोगे, देयर आर होल्डिंग्स विच टेल यू कौन सी ज्वेलरी खरीदनी है, यू नो, कौन सा का बर्गर खाना है, कहां से खाना है. एम आई राइट? व्हाई फेसबुक बिकेम a billionaire product? Because in the world, psychologists say this, एक चीज व्यक्ति कभी डिनाई नहीं करता, वो है रिकमेंडेशन ऑफ अ फ्रेंड. अगर किसी का दोस्त कुछ रिकमेंड कर देता है, a person cannot deny that. Mostly he is going to buy that product. And therefore, Facebook became a billionaire product. Psychologists are playing with our minds by putting the numbers like 49999. अरे 5,000 लिख दो ना, ₹1 कम करने में क्या हो जाएगा? ₹1 कम करने में हमें लगता है ये प्रोडक्ट ₹1,000 कम है. This is the thing. This is the scenario. Yeah. So this is just a glimpse I'm giving you. So why people don't know why the history behind the Valentine's Day? Because अगर आपको history बता देंगे भैया, तो आप जाके ये products नहीं खरीदने वाले. And on the other hand, you are going to decrease your purchase. Because when you know that there is a God, there is someone who is watching me, who is watching my actions, तो आप क्या करोगे? आप अपने जो मटेरियल नीड्स है उसको कम करोगे, नेचर को कम एक्सप्लॉइट करोगे. आप लाइफ बेसिक नेसेसिटीज में जितना अच्छे से अच्छा जी सकते हो उतना अच्छे अच्छे जीने का प्रयास करोगे. एंड दिस इंडस्ट्रियल पीपल विल सफर. एंड देयरफॉर व्हाई पीपल डोंट फील सेटिस्फाइड?
क्यों वो सेटिस्फाइड फील नहीं करते? क्योंकि हम वो नहीं लेते और यूज करते हैं जीवन में जो हमको चाहिए। हम वो लेते हैं जो दुनिया हमको देनी चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, हम सबने सुना नहीं? सो मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दें और पानी से बाहर निकालने के बाद बोले, ए मछली, आई लव यू सो मच, देयरफॉर आई एम गिविंग यू दिस डिओड्रेंट, and I am also giving you this hamburger, I am giving you this suit to wear, and I am giving you everything which you need, have this, enjoy the life. What fish will say? हे बाबा रास्कल नंबर वन, ये सब चीजें बाद में देना, पहले मुझे पानी में डाल। या ये सब चीजें मेरे कुछ काम की नहीं है until unless I am in water. So what is happening with us is this: हमको बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में एंजॉय करने के लिए। ओनली जस्ट फ्यू डेज बिफोर आई वेंट टू अ मार्केट, हमारे एक डिवोटी का बर्थडे था, तो उनके लिए गिफ्ट परचेज करने गया। आई वाज जस्ट सीइंग कितने बड़े बड़े जाइगेंटिक मॉल्स आर देयर, सो मेनी शॉप्स आर देयर। एक बेकरी में आप जाते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। किसके लिए? जस्ट टू सेटिस्फाई अ बियरली 1 इंच टंग, 1.5 इंच टंग। उसके सारे डिजायर सेटिस्फाई करने के लिए देयर आर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विच यू कैन ईट। बट डज एनीवन गेट सेटिस्फाइड बाय दैट? नॉट एट ऑल। We have seen it. This is our personal experience. Nobody gets satisfied. Why? Because मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। We are not this body, we are soul. We are not meant to enjoy this material world, but to be in the spiritual world, to be with Krishna, where we belong to. So how we can be happy here? Possible ही नहीं है कि हम यहाँ खुश हो पाए. This is a basic principle of life. Yeah. So therefore, here's a very beautiful quote. You must remember to love people and use things rather than to love things and use people. This is a scenario nowadays, right? People are using people to get those things which they love. They don't love people. Yeah. So we should remember this. Now, as we are moving forward with this session, now this is it with the Valentine's story. We have understood what is the history behind the Valentine's Day and everything. Now, the second part of the session is starting right now here itself. What is the goal of your life? Or what is the goal of anyone's life? अब ये तो आंसर मैं चाहता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबसे, क्योंकि आप सब एटलीस्ट बेसिक कोर्स तो कर ही चुके हैं भगवद गीता का। सो प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। परफेक्ट। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। कोई मिजरेबल नहीं होना चाहता, कोई दर्द नहीं चाहता, कोई मिजरी नहीं चाहता। अगर कोई चाहता है तो प्लीज talk to me. You are in depression, really. You need to come out of it, because really no one wants miseries in life. Everyone wants happiness only. Yeah. So what is the goal of our life? Happiness. Okay. ये तो हम सबको पता है, ये मैं शेयर कर चुका हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस वी आर लुकिंग फॉर। बिकॉज वो कुत्ता जो गली में घूम रहा है, उसके पास भी कुतिया है और वो कुतिये के साथ बहुत खुश है। He is also happy. If you ask that dog, are you happy? He'll say, yeah, I am very, very happy. If you ask a hog, sewer eats stool, you know. Can you imagine? He eats stool, the remnants of someone's body, any species' body. And if you ask a hog, are you happy? He'll say, yes, I am also very, very happy. I am very, very satisfied. See, I also have family. My wife is there, my little children are there. I'm very satisfied in eating a stool. But from our point of view, we can see that he is not happy. He is in a very precarious condition of life. Huh? But still he feels happy. Yeah, that is the great mystery of this world. There is one story also in Purana, how Indra becomes hog, you know, by the श्राप of बृहस्पति मुनि। बृहस्पति मुनि उनको श्राप दे देते हैं और वो हॉग बन जाते हैं, सुअर बन जाते हैं। And then Brahma ji comes and tries to convince Indra in the body of hog that you are Indra, you are the, you know,
king of all the demigods, you live in heaven, you drink somras, and you have so many apsaras, you should go there. But Indra says, no, no, I am very much satisfied. Why you are interrupting my happiness? Huh? Can you just imagine? Indra in the body of hog is feeling completely satisfied and happy. But is it like that? No, it is not. Why it happens? Why a person feels happy in any situation of life? Because of illusion. Therefore, all the Shastras say that we are an illusion, we need to come out of it. Only a person who is in higher consciousness can understand that a person in the lower consciousness is suffering. जैसे हम समझ पा रहे हैं कि कुत्ते और सुअर और दूसरे लिविंग एंटिटीज दे आर सफरिंग, दे आर ऑलवेज इन एंजाइटी. Similarly, the sages, the sadhus, uh, the Vaishnavas who are in the higher level, those who are, you know, seeking the transcendental pleasure and feeling it. Brahma bhuta prasannatma na suchiti na kankchati sama sarveshu bhuteshu na mad bhaktim labde para. Krishna says, this is the pleasure one should experience. इस pleasure के लिए आप बने हो. Brahma bhuta prasannatma. Not this sense gratificatory pleasure. So, what kind of happiness we are looking for? First is permanent. ऐसा नहीं कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम. नो, हमको ऐसी खुशी नहीं चाहिए. हमको कैसी खुशी चाहिए जो कि परमानेंट हो. सेकेंड, इट शुड बी एवर इंक्रीजिंग. परमानेंट है, अच्छा है, बट एट द सेम टाइम हर दिन बढ़नी भी चाहिए. If it is not increasing every single day or every single moment, then also we'll not feel much satisfied, because the nature of the soul is that we want more and more happiness. Excuse me. So yeah, first is permanent, second is ever increasing, third is shared with loved ones. At this point, sometimes we feel, no, no, it is not necessary. We don't want a happiness which should be shared with loved ones. अगर हम पूरी तरीके से खुश रहें तो हमको बड़ा आनंद आएगा. क्या जरूरत है दूसरों के साथ शेयर करने के लिए? Just close your eyes. Please close your eyes. Do this meditation for a second. Think about this. Whatever you have dreamed of in this material world, car, bungalow, food items, clothes, anything, everything is in front of you in an infinite quantity. जितना चाहिए उतना है, उससे जरूरत से काफी ज्यादा है. Yeah. But the only thing is that there is no living entity in this world remaining other than you. You are the only one here. Now enjoy everything which you have. Feel it. Now open your eyes. If you have closed, then please open your eyes. So actually in COVID times, when the second COVID was there, due to some urgency, I came out with my father on the streets. And believe me, while looking at the streets, I went beside the railway station. Just 24 घंटे there was a rush every single moment. There was not a single living entity on any road. Only barriers were there and some policemen, वो भी दूर दूर चौराहे पे थे. And at that time, there was a very, very deep negative feeling in my heart. I just wanted to be at home as soon as possible. My dear friends, we can never have any happiness until unless we can share it with our loved ones. Yeah. And at last, this is variety. It should be full of variety. ये चार चीजें होना बहुत बहुत जरूरी है. Until unless they are present in any happiness, we will not be satisfied by that. And the great thing is this: there is no thing or no person in this world which can give, who can give this happiness. कोई भी नहीं दे सकता. No one can give. If you love a person in this world, any person, क्या वो person आपके साथ हमेशा रहेगा? या तो आप ये संसार छोड़ के पहले चले जाओगे या वो चला जाएगा. तो that is not permanent. हाँ. So this is lacking. Hmm?
Second thing, if you say no, I will live with some products, I find happiness in cars and everything, is it ever increasing? क्या वो हमेशा बढ़ता है? नहीं, it does not increase always. On the other hand, it says like this, you know, वस्तु की कीमत आने से पहले और इंसान की जाने के बाद होती है. समझे? वस्तु की कीमत आने से पहले और इंसान की जाने के बाद होती है. जब तक आपके पास आईफोन नहीं है, तब तक ही आईफोन में हैप्पीनेस दिखती है. एज सून एज यू गेट इट, you will treat it like a Redmi only. Yeah. You will not be happy every single day waking up and like, yeah, I have an iPhone, I have an iPhone. Amazing, amazing. My life is perfect. I have an iPhone. Hey, people will say you are mad. Yeah. You know, there are so many big footballers, so many players who have the best of the cars in the world in their garage. If we see a Ferrari or a Lamborghini, their topmost model in the street, we'll be like, wow, amazing. Right? If I could have this in my life ever, अब जस्ट थिंक अबाउट इट, जिस पर्सन के पास है, क्या वो गराज में जाके एवरी सिंगल मॉर्निंग ही इज डूइंग लाइक दिस, ओह वाओ अमेजिंग, व्हाट अ लैम्बोर्गिनी आई हैव? क्या वो करता होगा ऐसा? विल यू डू दिस? नो, नॉट एट ऑल. इट मींस क्लियरली दैट देयर इज नो हैप्पीनेस इन द थिंग्स, एंड देयर इज लिटिल हैप्पीनेस, बट वो जैसे कि जैसे हमारे पास वो चीज आती है, वो वस्तु हमारे पास आती है, दैट हैप्पीनेस started decreasing every single day. Yeah. And similarly, the others too can also be explained. So there cannot be any person or there cannot be any thing which can give us this happiness. So do we want such happiness? Yes. तो मिलेगी कहाँ से जी? Where do we find? कहाँ मिले इस तरीके की happiness? What brings happiness in life? पहले तो ये समझते हैं कि खुशी आती ही कहाँ से. ठीक है? First is there is attraction principle in the world. We all get attracted by something or someone. You know, for example, मदर जो होती हैं वो अपने बच्चे से अट्रैक्ट होती हैं. कैट्स जो होती हैं स्ट्रीट में हम देखते हैं, वो भी अपने कप्स जो उनके बच्चे होते हैं उनसे अट्रैक्ट होती है. इवन एंड्स आर अट्रैक्टेड टू शुगर. या आर ऑल द फाइव सेंसेस आर अट्रैक्टेड टू देयर सेंस ऑब्जेक्ट्स. ऐसे जैसे ही आप कुछ सुंदर देखते हो, आप तुरंत उस चीज को पाना चाहते हो, उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हो. कोई आप अच्छा सॉफ्ट चीज टच करते हो, तो आप उस पर और ज्यादा उसके साथ समय बिताना चाहते हो, कुशन हो और एनीथिंग लाइक दैट. कोई म्यूजिक, यू नो व्हेन यू गेट अट्रैक्टेड बाय समथिंग, सम म्यूजिक, सम पर्टिकुलर सॉन्ग. आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, आप अगर मान लो मार्केट में जा रहे हो या कहीं पे वॉक कर रहे हो, और जैसे ही वो म्यूजिक सुनाई देता है, वी वांट टू हियर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. या वंस आई कॉल्ड वन डिवोटी and he put it very nice Hare Krishna tune in his caller tune. So मैंने जब वो सुना, मैंने कहा यार अमेजिंग, सच अ नाइस ट्यून, आई हैव नेवर हर्ड इट. एंड ही पिक्ड अप द कॉल. आई सेड, अरे बाबा इतना अच्छा लग रहा था, व्हाई यू पिक्ड अप द कॉल? यू कट इट अगेन, आई विल कॉल यू एंड आई विल अगेन लिसन टू द ट्यून. आई डिडंट सेड इट लाइक दैट, so our ears are also get attracted to beautiful songs. Similarly, our nose, our tongue, कुछ अच्छा सूंघने मिल जाए, कुछ अच्छा खाने मिल जाए, we get attracted. As soon as we get attracted to something, we say that we love that particular thing. Am I right? If you are attracted by gulab jamun, what do you say? I love gulab jamun. Yeah. If you get attracted to, let's say, some song, you say, I love that song. Why? Because you get attracted to that. But what happens is that that thing is, as soon as you get attracted to something, you say, I love that thing or that person. And when you have that, you feel happiness. जब वो आपको मिल जाता है, आप happiness feel करते हो. अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है, आप शाम को खाना खाने गए और मम्मी बोले, बेटा आज मैंने गुलाब जामुन बनाई है, मम्मी गुलाब जामुन मजा आ गया, वो बढ़िया. या समोसे बनाए, मम्मी समोसे मजा आ गया आज तो, वो बढ़िया. या या आप मान लो, यू नो कोई सॉन्ग, वट एवर, सेम थिंग अप्लाइज टू एवरीथिंग. सो यू फील हैप्पीनेस व्हेन यू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच यू लव. एंड लव कम्स बाय अट्रैक्शन. you know when you get attracted to someone, to someone's qualities, to some person or to something. The thing is with this world is this, किसी भी चीज जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, जिसको आप लव करते हो, जिससे आप हैप्पीनेस फील करते हो, दे आर लिमिटेड.
They can give you a limited happiness, but not the happiness which we have shared before. But a soul, by default, its nature is to experience that happiness which we have shared before. Therefore, we want that amount of love to get that happiness. Getting my point? I hope you are not getting confused. अगर सोल की बात करें, आत्मा की बात करें, आत्मा का नेचर ऐसा है कि उसको इनफाइनाइट हैप्पीनेस चाहिए. बट इस दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लव एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस आपको दे सकते हैं. Therefore, there is one person who is called as भगवान. भगवान वर्ड की परिभाषा पराशर मुनि के थ्रू दी गई है. द वन हु possesses six opulence in infinite quantity and that too also for eternity. कभी खत्म नहीं होता, इनफाइनाइट क्वांटिटी में होता है, हमेशा बढ़ता रहता है. एंड दैट पर्सन इज कॉल्ड एज भगवान. Okay, what are these six opulences? I have already described it before. We'll also again go into the detail of it. First attractive thing is wealth. You know, as soon as we see a wealthy person, we get attracted to him. Ambani, Elon Musk, Jeff Bezos, yeah, Warren Buffett, very famous people. Tata, Birla. बच्चों को भी नाम पता है इनके. क्यों? क्योंकि wealth attracts. या अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा सूट पहन के आए कॉलेज में, it will attract you. और अगर वो कोई बहुत महंगी गाड़ी में आए, he will attract you. So wealth attracts. This is the one thing which attracts the soul. How much wealth a god possesses. IIT में जो सेशन हुआ था उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि one person can say that I am करोड़पति, other can say I am lakpati, but someone can say I am arabpati, I am kharabpati, but can anyone say that I am Lakshmipati? No, not at all. And there is one interesting story on this. Once Akbar and Birbal was there, and Birbal used to ask so many interesting questions to Akbar. So he asked Akbar, Akbar, there is one thing which you can do which even God cannot do. Akbar started thinking, hey, ऐसी कौन सी चीजें जो मैं कर सकता हूँ जो कि भगवान भी नहीं कर सकते. एंड वो बोले बीरबल, हाँ ऐसी एक चीज है, आप सोचो इसके बारे में. तो ही स्टार्टेड थिंकिंग, was thinking, thinking and thinking, but was not getting answer. एक हफ्ता बीत गया, अकबर को समझ ही नहीं आ रहा ऐसी कौन सी चीज है भैया जो मैं कर सकता हूँ जो भगवान नहीं कर सकते. He became completely frustrated and came to बीरबल and said, बीरबल, मुझे वो क्वेश्चन का जवाब चाहिए और अगर वो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें मेरे राज्य से बेदखल कर दूंगा. एंड बीरबल said, जहां पना यही आंसर है. The answer is this only. You can make any person go out of your kingdom, but God cannot do that. आप किसी को अपने राज्य से बेदखल कर सकते हो पर भगवान नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनके राज्य के बाहर क्या है? उन्हीं का राज्य है. उसके बाहर क्या है? उन्हीं का राज्य है. उसके बाहर क्या है? उन्हीं का राज्य है. Everything belongs to God only. He is the proprietor of everything. This is the definition of God. या अहम सर्वस्य प्रभवः मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति ज्ञात्वा भजन्ते मां भूला भाव समन्वितः. भगवद गीता. Krishna says, Aham sarvasya prabhavaha. Everything emanates from me, material or spiritual. I am the creator of everything. So this is the first thing, the wealth of the Lord. Second is strength. Yeah. The flights are not changing and कोई भी मुझे इन्फॉर्म नहीं किया. अच्छा चेंज हो रहा है. ओके, मेरे में चेंज नहीं हुआ. थैंक यू. So second thing is strength. Yeah. Here we can see the image of the rock. Very attractive. Anyone who has the bicep, triceps, well-built body, he attracts. So second attractive thing is strength. Here you can see he is picking up the dumbbell. According to my calculation, it would be around 100 kg. अगर एक प्लेट 10 kg की है तो 100 kg का डंबल उठा रहे हैं. 100 kg का डंबल उठाने में भाई साहब को पहले तो सपोर्ट लग रहा है पूरा. बैक उनने स्ट्रेट कर रखी है, थोड़ी सी भी ऊंची नीची हो गई तो टक होकर टूट जाएगी. या और उठाने में पूरा पसीना निकल रहा है. एंड आफ्टर पिकिंग अप, I can guarantee in just 5 to 10 seconds he is going to leave it. अगर नहीं करेगा तो पक्के में टूट जाएगा कुछ ना कुछ तो. Here you see what Krishna did is this only. He lifted the Govardhan hill at the age of 7 years. That too also left hand की सबसे छोटी उंगली में. और ज्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 7 दिन 7 रात.
और वो करते समय भी कितना ब्यूटीफुल स्माइल है भगवान के चेहरे पे, अमेजिंग. He was playing the flute with his right hand, and giving pleasure to the devotees present there. This is a glimpse of the strength of the Lord. In his plenary portion as Sankarshana, Anant Shesh, सारे के सारे यूनिवर्स को अपने हुड पे रखे हुए. Yeah, this is what Bhagavatam describes. Third thing which attracts anyone is this beauty. आज काफी सारे लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने अपने पार्टनर्स के साथ. And you are attending this session of Bhagavad Gita because you are very rare souls in this whole creation. Not according to me, but according to Bhagavad Gita. Krishna says, Manusyanam sastreshu kasyat yatyati sadeh yatatam api siddhanam kasyat mam viti tatvata. हजारों में से कोई एक सिद्धि का प्रयास करता है. उन हजारों में से जो सिद्धि का प्रयत्न करते हैं और जो परफेक्शन हासिल कर लेते हैं, उनमें से कोई एक मुझे जान पाता है. सो देयर इज अ रेयरनेस टू स्टडी भगवत गीता एंड टू नो अबाउट कृष्णा. इतना रेयर है. या सो थर्ड अट्रैक्टिव थिंग इज ब्यूटी. काफी सारे लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ गए होंगे, बट द फर्स्ट थिंग अ पर्सन लुक्स इन हिज पार्टनर इज ब्यूटी. मोस्टली नाउअडेज, मोस्टली दिस इज द कल्चर. एंड जैसे ही ये फूल मुरझा जाते हैं, कोई इन फूलों की तरफ देखता भी नहीं है. आफ्टर द एज ऑफ 40, 45, आपने देखा है कोई बुढ़िया को, कोई बूढ़ी अम्मा को जाके वैलेंटाइंस डे विश कर रहा है या उनको लेके डेट पे जा रहा है कि चलिए मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मैं बहुत अट्रैक्ट हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि ब्यूटी अट्रैक्ट करती है. बट वो ब्यूटी हमेशा रहती नहीं है ना. एंड वो भी बहुत ज्यादा तो होती नहीं है. कोई इससे अट्रैक्ट होता है, कोई उससे अट्रैक्ट होता है. फिर द थर्ड ऑपुलेंस ऑफ गॉड इज ब्यूटी. वन नेम ऑफ कृष्णा, मदन मोहन. The one who attracts the Madan means Cupid. Cupid मतलब कामदेव. In हिंदी we say. इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में जो अट्रैक्शन है एक मैन और वुमेन के बीच में, एक आदमी और औरत के बीच में, अपोजिट सेक्स के बीच में, वो होती है सिर्फ और सिर्फ कामदेव के वजह से. ओनली बिकॉज ऑफ कामदेव इट इज प्रेजेंट. कामदेव अपने बाण छोड़ते हैं एंड द पर्सन गेट्स अट्रैक्टेड. नाउ द नेम ऑफ कृष्णा इज मदन मोहन, द वन हु कैन इवन अट्रैक्ट the Cupid. Now one of the pastimes come in the Krishna लीला is that एक बार कामदेव आते हैं और भगवान को मोहित करने का प्रयास करते हैं, उनको बाण फेंकने का प्रयास करते हैं when he was with gopis. As soon as he throws that arrow towards Krishna, what happens is that a very powerful arrow, that arrow itself becomes very powerful and comes back to Kamdev. वो आगे कामदेव को हिट करता है एंड कामदेव फेंट्स. कामदेव फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं. What it means is that even Kamdev, by seeing the beauty of Krishna, बेहोश हो जाते हैं. This is the beauty of Krishna. Yeah, it is just one of the story which I have shared. But fourth thing is the fame. Anyone who is very famous attracts. Here we can see the example of our dear Prime Minister Narendra Modi. But similar with Krishna, if you see how much he is famous, even he does the stealing, he gets famous for that. People create songs. Gulshan Rai ji, T series founder, he created so many songs from this Balya Leela of Makhan Chori of Krishna and earned millions of dollars, millions of rupees at that time. And one more pastime is there that once Krishna left the war field, वो जो fight कर रहे थे वहां से छोड़ के चले जाते हैं. He was fighting with Jarasandh. 18th time he came and Krishna left that battlefield. भगवान खुद ही बताए कि क्षत्रिय अगर वॉर फील्ड से छोड़ के जाने से अच्छा क्या है, क्षत्रिय सुसाइड कमिट कर ले. दैट इज गुड फॉर हिम. दैट वुड बी द बेटर थिंग फॉर हिम. बट हियर ही हिमसेल्फ इज नॉट फॉलोइंग दैट. बट व्हाट पीपल डू इज दैट, गुजरात में एक मंदिर है, देयर दे से मंदिर में कौन छे, रणछोड़ छे, द वन हु लेफ्ट द बैटलफील्ड. या सो वी सी हाउ फेमस कृष्णा इज फॉर हिज एक्ट्स, not to this planet only, throughout the whole universe. Very, very famous. First attractive thing is knowledge, of course. Albert Einstein or anyone who has good intelligence and who is knowledgeable, he attracts. What knowledge Krishna has.
Actually, every knowledge comes from Krishna only. In Bhagavad Gita, he says, Vedesh cha sarver aham e vedyaha, Vedant krit ved ev chaham. I am the creator of Vedanta. From me comes all the Vedas, and the purpose of all the Vedas is to know me. Yeah. And he gave one book, which we call as Bhagavad Gita. That is the direct instructions of the Lord to Arjuna. Shankaracharya, the most renowned scholar in the whole world, he said, if the one book which you need to keep with yourself, which consists the essence of all the Vedic scriptures, is Bhagavad Gita. How much time Krishna took it to speak Bhagavad Gita? 40 minutes. 40 मिनट में बताई थी भगवान ने. एंड नॉट जस्ट दैट, ऐसा नहीं था कि हमारी तरह अगर हमको कुछ बोलना होता है या हमको कुछ एग्जाम देना होता है, हम बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए ना, रात में बैठ के पढ़ते हैं एंड उसके बाद भी हम मिस्टेक कर देते हैं. एक दो चीजें तो ऊपर नीचे हो ही जाती है. बट ऐसा नहीं था कि भगवान एक रात पहले अर्जुन से बोलना, देख यार देखो तो कल अभी बिविल्डरमेंट होगा, मुझे तो पता है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो कल मुझे भगवत गीता बोलनी है, तो अभी मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ कहीं गलती ना हो जाए. हाँ, क्योंकि मैंने बोली कब थी, पिछली बार मैंने बोली थी सूर्य देव विवस्वान से, वो तो बहुत लाखों साल पहले बोली थी, तो अब थोड़ा सा याद नहीं है तो थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ एक बार. नहीं, और जब बोल रहे हो तो हो सकता है गलती हो गई, नहीं नहीं अर्जुन सॉरी गलत बोल दिया मैंने, है ना, थोड़ा लेट मी करेक्ट माई सेल्फ. देयर इज नथिंग लाइक दैट बाबा. इवन तो बाय टुडे 5,000 साल हो चुके हैं लिखे हुए भगवत गीता वेद व्यास जी के द्वारा, आज तक कोई भी स्कॉलर, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बड़े से बड़ा पर्सन, इवन तो 650 से ज्यादा कमेंट्रीज हैं भगवत गीता पे. Excuse me. But nobody has this courage to even change a single syllable of Bhagavad Gita, what to speak about a word or a sentence or a verse of Bhagavad Gita. So this is called most knowledgeable. And at last, renunciation of Krishna. We see renunciation is also very very attractive. एक book है बहुत famous है, A Monk Who Sold His Ferrari. Why it is top seller? Because so many people want to read. अरे ऐसा क्या हो गया इसके जीवन में, इसने फरारी छोड़ दी, इतना वैराग्य आ गया. You know. So this attracts. But how much renunciation Krishna possesses? He became the charioteer of Arjuna, which is one of the very lowest position to take. And not just that, 18 days since sun sunshine to हाँ, जब तक सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक भगवान अर्जुन के लात खाते थे. वाई? बिकॉज इतना ज्यादा साउंड है कुरुक्षेत्र में, कुछ सुनाई तो देगा नहीं, तो बोल तो सकते नहीं है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सामने जाना है. तो यू कैन ओनली कन्वे द मैसेज, द रथी कैन ओनली कन्वे द मैसेज टू सारथी बाय किकिंग, यू नो, बाय किकिंग टू हिज शोल्डर. राइट मारा तो राइट, लेफ्ट मारा तो लेफ्ट, सेंटर मारा तो सामने, लाइक दैट. He took that position in Rasuya Yagya. He was worshipped as the most respectable personality in the whole universe. And what he did is that he washed the feet of the sages who came to the Rasuya Yagya and also picked up the plates after they have eaten the prasad. So this is the renunciation of the Lord, and therefore it makes the Lord all attractive. ये 6 चीजें, please understand why Krishna is all attractive. It is very easy to understand because किसी भी पर्सन में वो 6 में से एक भी ऑपुलेंस, एक छोटा सा भी होता है. कृष्णा सेज in Bhagavad Gita, all the living entities, whatever the qualities you do see in this world, whatever the opulence by which you are getting attracted in this world, they are the spark of my splendor. They are the spark of my splendor. जब आग जलती है ना, धधकती हुई आग, उसको बोलते हैं स्प्लेंडर. उसमें से चिंगारियां निकलती हैं ऐसे ऐसे करके. यू हैव सीन, मस्ट हैव सीन इट. वो जो चिंगारी होती है ना, कृष्ण से जिन चीज से तुम अट्रैक्ट हो रहे हो इस वर्ल्ड में, ये सारी चिंगारी है मेरे आग की. कैन वी जस्ट इमेजिन हाउ मच अट्रैक्टिव ही वुड बी. एंड देयरफॉर कृष्ण नाम जो है उसका मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव. देयरफॉर भागवतम सेज, इफ द वन वर्ड which has to be given to the god is Krishna. Krishnastu Bhagavan Swayam. Ete Chamskala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Yeah? Because all the features which a living entity wants or seeks in a personality, in one personality,
that personality should be called as God. And all the things are present in that personality becomes all attractive. And all attractive in Sanskrit is called as Krishna. This is easy to understand, right? You can also see the Radha Madhav in Mayapur. Deities are so beautiful, so beautiful. Anyone can get easily attracted to them, easily love them. So, my dear friends, now the session is coming to end, and the message is this: by nature, we are attracted to the Supreme. By nature, we are bound to love Him. We are meant to love Him. That is our dharma. That is the dharma of the soul. A living is to love God. धर्म क्या होता है? धर्म किसी भी एंटिटी की वो प्रॉपर्टी जो उससे अलग नहीं की जा सकती, दैट इज कॉल्ड धर्म. फॉर एग्जाम्पल शुगर. शक्कर से मिठास अलग कर देंगे तो शक्कर शक्कर नहीं है, देन इट इज जस्ट पार्टिकल्स. नमक से खारापन अलग कर दोगे तो नमक नमक नहीं है, इट इज जस्ट अ पाउडर. सिमिलरली आप मिर्ची से तीखापन अलग कर दोगे तो आप मिर्ची मिर्ची नहीं है. मेनी टाइम्स पीपल जिनको तीखा खाना पसंद है, जब वो मिर्ची खाते हैं तो दे फील ये कौन सी मिर्ची है, इसमें तो ये मिर्ची ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो तीखी नहीं है. सो किसी भी एंटिटी, हर एक एंटिटी का एक धर्म है. यू नो अगर वो चीज उसमें से मिसिंग होती है तो दैट एंटिटी का वो एग्जिस्टेंस ही लॉस्ट हो जाता है. हाँ. सो सिमिलरली अ सोल बाय नेचर इट्स धर्म इज टू लव, is to love. Therefore, in this world also we see people are searching for this thing only everywhere. हम सब, हर एक जीवात्मा किसी ना किसी चीज से अट्रैक्ट होता है और किसी ना किसी को लव करना चाहता है, बहुत डीपली, कंप्लीटली, होल हार्टेडली. बट डेफिनेटली वो सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि वो नेचर है भगवान के लिए. बट somehow in this world we forget that. Yeah, I shared the reason also in the sessions. So we are meant to love Krishna, and how much Krishna loves us. Just imagine that. Krishna says in Bhagavad Gita, what is the peace formula? The peace formula is to just understand how much God loves us and we are meant to love Him. This is the peace formula. Bhagavad Gita 5.29. हाँ? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. Krishna is saying in the Bhagavad Gita. That I am the enjoyer of each and every yagna and every sacrifice. I am the proprietor and controller of each and every planetary system. And not just that, my dear friends, he says, I am the ever well-wishing, most loving, dear friend to each and every living entity. What we need to do is that just recognize him. Just recognize him. And then what will happen? He says, Suhridam Sarva Bhutanam ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. ज्ञात्वा माम मतलब जो मुझे इस प्रकार से जानता है, he will attain peace, he will attain love, he will attain happiness. Yeah, because just imagine, there is one person who loves you like anything else. No one can love you as much as he loves you, and you also have same love for him. And not just that, that person is not a normal person. He is the creator and proprietor of everything and the controller of everything. अरे आप मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई पर्सन हो जो सब चीज कंट्रोल कर सकता है और वो आपका डियर मोस्ट लविंग फ्रेंड हो, तो आपको शांति नहीं मिलेगी? अरे किसी का अगर प्राइम मिनिस्टर दोस्त हो या प्रेसिडेंट दोस्त हो या राजा, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो आजकल चलने लगा. लेट्स गो टू द प्रीवियस टाइम. किंग. इफ इफ किंग इज द फ्रेंड ऑफ समवन, व्हाट काइंड ऑफ एंजाइटी दैट पर्सन कैन हैव? कोई एंजाइटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजा उसका दोस्त है. उसको क्या चाहिए अब? He does not need anything. Yeah. So we need to just turn our face towards, Shri Radha Madhav, to Krishna, and then all peace, all love is there to experience. And what is the process to awaken that? Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process.
In Kali Yuga, this is the process to attain the love of God and to go back to Him and to live peacefully. And that is the way we should celebrate this very auspicious day, which is Valentine's Day. Yeah, because in this day, on this day, a person sacrifices his whole life for the love of God. It is not possible for anyone to, tolerate such a high level of torture and at last to death, to the extent of death, until and unless you have the higher love or higher feeling of happiness. वो possible ही नहीं. Krishna himself says in the Bhagavad Gita, you know, रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. Until unless you don't have a higher taste, you cannot leave the lower one. तो हायर टेस्ट होना बहुत बहुत जरूरी है. At last, there's a spiritualist versus materialist. I said that we'll share that. So materialist says in the left hand side that what you are doing, they criticize spiritualist. What you are doing? What kind of happiness you have? You don't have any happiness. See, we have happiness. आपने कभी दारू पी है? हमने पी है. आपने कभी सिगरेट पी है? हमने पी है. आपने कभी रोल्स रॉयल्स में घुमा है? नहीं घुमा, हमने घुमा है. हाँ. आपने कभी एंजॉय किया है? हाँ, ऑपोजिट सेक्स के साथ और एनीथिंग इन द होटल? हमने किया है. या आपने तो ये सब नहीं किया. वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग. या एंड देन द स्पिरिचुअलिस्ट दे से that there is no happiness in the material world. There is no happiness. Every in a whole, if you see, there is only suffering. सो मटेरियलिस्ट कह रहे हैं भक्ति में कोई मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में और डिवोशनल सर्विस में कोई आनंद नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है. और यहाँ पे आप आते हो सेशन अटेंड करने में, वी आर सेइंग नो, दे आर लिविंग इन अ मिजरेबल लाइफ. देयर इज नो हैप्पीनेस देयर. सो हु इज राइट? हु इज राइट? या डेफिनेटली फिलोसॉफिकली जाएंगे तो बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं, यू नो, टू एनीवन if he attends a session. But if someone asks this question to you, what you will decide? Then people say, ठीक है, जिसको जो करना है, जिसको जहां खुशी मिल रही है उसको करने दो भैया, क्या फर्क पड़ता है? वो भी अपने आप जगह खुश है ना, ठीक है. हम अपनी जगह खुश है, ठीक है. क्या फर्क पड़ता है? क्यों परेशान करना किसी को? नहीं जी, ऐसा नहीं है. वो पर्सन बोल रहा है स्पिरिचुअल लाइफ में क्या मजा है, देखो हम कितने मजे कर रहे हैं. स्पिरिचुअलिस्ट बोल रहा है मटेरियल लाइफ में क्या मजा है, हम कितने मजे कर रहे हैं. जस्ट मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, आप बताइए कौन सही है. एक पर्सन जिसने सिर्फ मोतीचूर का लड्डू खाया है एंड वो बोल रहा है मोतीचूर का लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, इससे स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है दुनिया में. एंड दूसरा पर्सन है जिसने रसमलाई भी खाई है और मोतीचूर का लड्डू भी खाया है एंड ही इज सेइंग मोतीचूर का लड्डू मीठा है बट रसमलाई में ज्यादा स्वाद है. नाउ यू टेल मी हु इज राइट, द फर्स्ट पर्सन और द सेकंड वन? हु कैन जज which is better? Who can say which has the higher taste? Of course, you will be saying, "Bro, जी ये क्वेश्चन तो पूछने का नहीं है," but still you can answer if you like. Second one, thank you, Manik bro. Yeah, second one, simple. See, अरे भाई साहब, मटेरियल्स को एक्सपीरियंस ही नहीं है. Until unless you don't experience, how you can say? They say it. Every sadhu has a past and every thief has a future. हर एक साधु का पास्ट होता है और हर एक चोर का फ्यूचर होता है. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. 3.5 साल पहले आई वॉज जस्ट नॉट इनटू एनीथिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. मुझे भगवद गीता के बारे में कुछ नहीं पता था, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ नहीं पता था. आई वॉज नॉट एट ऑल इनटू दिस, लिविंग लाइक अ वेरी नॉर्मल पर्सन, जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था. एंड नॉट जस्ट दैट, आई हैव वॉच्ड ऑल द वेब सीरीज व्हिच वर पॉपुलर एट दैट टाइम, ऑल द मूवीज. कोविड में हम सबने यही किया होगा मोस्टली ने, क्योंकि मेरे आई एम ऑल्सो नॉट वेरी लाइक बचपन से आई वॉज इन अ वेरी डिवोशनल फैमिली और लाइक दैट. नहीं नहीं, मैं भी नॉर्मल फैमिली से ही हूँ. आई एम नॉट ऑल्सो फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली और लाइक दैट. सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दोस थिंग्स. वो फ्रेंड्स के साथ बातें करना, नाइट में लेट नाइट तक जगना, गेम्स खेलना. गेम्स में भी मैंने आई प्लेड सो मेनी गेम्स जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ 130 GB इन द लैपटॉप. आई प्लेड देम.
But as soon as I came to Krishna consciousness, my personal experience is this: by the mercy of Krishna, from the last 3.5 years, I have never played any material song or to hire it, or to speak about watching movie or web series or anything like that. Not at all. Not at all. ऐसा नहीं है कि तो फिर तो आपकी जीवन बड़ी निराशीन हो गई होगी, बड़ी दुख में जी रहे होगे आप, आपके जीवन में कुछ मजा ही नहीं होगा। भैया अगर मजा नहीं होता तो मैं उन सबको छोड़ नहीं पाता। यू नो यू मस्ट हैव ऑल टेकन अ वाव इन न्यू ईयर कि मैं ये चीज अब आगे जाके नहीं करूंगा। बट क्या होता है, 2-3 दिन बाद वो वाव टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो ना करने के लिए कुछ अच्छा हायर चीज करना पड़ेगी, तब उसको मेंटेन कर सकते हो आप। दैट इज व्हाट कृष्णा सेइंग इन भगवद गीता व्हेन ही सेज रस वर्जम रसोपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब तक हायर टेस्ट होगा नहीं, नीचे का टेस्ट छूटा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। So I am nothing in comparison to these people you are seeing in the image. They were the hippies of America. They had all the luxuries which we are seeking for. ये छोड़ गरीब लोगों के घर के नहीं थे। When Prabhupada went there in the America, in between hippies, उनको hippies क्यों बोलते हैं? क्योंकि 24 घंटे नशा करते थे। और नशा ये दारू का नहीं करते थे, सिगरेट का नहीं करते थे, हाईएस्ट नशे करते थे, एलएसडी, हेरोइन, ये सब नशे करते थे। दे वर टेकिंग दीज थिंग्स। बट हमारे यहाँ के इंडिया के नशेड़ियों की तरह नहीं थे कि पैसा ही नहीं है पौवा खरीदने का। दे वर द सन्स ऑफ बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स। उस समय काउंटर कल्चर चल रहा था अमेरिका में, यू नो एंड देयर Prabhupada gave them Hare Krishna Mahamantra and the teachings of Bhagavad Gita. They accepted wholeheartedly. You see how blissfully they are chanting and dancing. Yeah. So this is the thing to understand. Thank you so much. I end this session here by giving you a little summary. The story of Saint Valentine we have discussed. उसमें हमने देखा the significance of marriage, hazardous effect of digital media, trap of industrialization which destroys the culture. Yeah, that is very important. आजकल धोती कुर्ता कौन पहनता है जी? अगर कोई पहन के आ जाए तो ऐसे देखते हैं उसको एलियन आ गया। You know? कभी हम जाते हैं ना स्ट्रीट पे, आईआईटी आता हूँ मैं या कहीं पे भी, सो पीपल सी अस लाइक एलियन एलियन। सो वाई? अपने इंडिया का कल्चर ही धोती कुर्ता। मेरे दादाजी धोती कुर्ता ही पहनते थे, कभी उन्होंने नहीं पहना पैंट शर्ट। या बट नाउ डेज व्हाट वी कैन से। Second, last, love people and use things. This is very important. Do not use people and love things to get and love things and use people to get those things. And what is the goal of life? Happiness. We all know this. What kind of happiness? Permanent, ever increasing, shared with loved ones. Where does it come from? Attraction gets converted into love, and that brings happiness when we get that. So the question is then why we are not getting satisfied in this world? Because we need infinite happiness, and that is only present in Bhagavan. The six opulences: wealthiest, strongest, most beautiful, most famous, most knowledgeable, and most renunciate. Yeah. And this makes God all attractive, and therefore it is natural to love him. It is very, very natural to love God. Yeah, there is no doubt in that. Okay. And then we have seen the materialist versus spiritualist. And now, thank you so much. Hare Krishna.